Welcome to the live. Hi. Hi, Lakshmi. Hi, Shania. Awkward human. Hi. How are you guys doing? Hi, ma'am. Hello, how are How are you? you? I'm great. How about you? I'm good, perfectly fine. All right. That's great. Uh, let's wait for a few more people to join. Then we'll Mhm. start. Okay. So your name is Rutman, right? Yes, ma'am. Okay. I'm Ritman. Yeah, Okay. I have graduated from psychology, and I'll be doing my postgrad next year. A Okay. master's, I mean. Yeah. I'm currently Good. pursuing a diploma from IGNOU In in HR. Yeah. okay, HR. Yes. Got it. Great. Yes. Like, please introduce yourself as well. Like, All what right. college you've gone to and everything. Okay. So my name is Hina Sharma, and I am a postgraduate in psychology. Also done my PG diploma in clinical skills from Council of India. Okay. Right now, I'm pursuing a PhD in psychology, That's clinical skills. okay. Nice. Great. So, today's session by the Minds Matter is going to be about understanding and coping with anxiety. All And of right. course, it'll be hosted, like, it'll be done by you. Yeah. Yes. I can see four people have joined. Yeah, five people, I guess. Mm. Let's wait for everyone, then we can start. Yes. How has your day been like? Yeah, day was perfect. Sometimes it became hectic after Okay. listening the issues and all. Uh, Yeah, but today was perfect. okay, great. Hi, the new people that are joining. Welcome. Welcome everyone. Okay, they left, I guess. It's again and five now. No problem. Let's wait for some more time. Yes.
So I would like to ask the audience what they think anxiety is. What do you all think anxiety is? Anyone? What is anxiety? What do you think anxiety is? Okay, shivering. All right. Yeah, that is one of the symptoms, I guess. Okay. Yeah, I think yeah, those can be symptoms of anxiety. Okay, great. And Miss Hina, would you like to define anxiety and how people should know about what anxiety is? Yes. So basically, the anxiety comes up with the stress, Yeah. like work stress, relationship stress, family stress. Any of the stress becomes anxiety, but it turns into the panic disorders while we don't care about it. We don't think we take it easily, like it's anxiety or we are not feeling good. So in some time we'll feel good, and at that point of time anxiety increased into the panic attacks. Acha, okay. 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 Are Many you people, other getting the people. questions? Uh, Questions? Yeah, are you getting the questions from the audience? So I'm getting. I asked about anxiety, so they're telling me things. Are you not? Can you not Okay. read it? Okay, No. I'll just tell you. For someone, Ritika said, for me it's shivering, feeling nauseous, hyper overthinking. Mhm. And then Lakshmi said, anxiety for me is sudden stress and overthinking small things and the consequences, mainly negative thoughts. Negative thoughts. Okay. Yeah. And then unorthodox Baba said, feeling uneasy due to stress. And Vanish said, sudden panic attack. Yeah. So, how can you think that this is a panic attack and this is not? Because Yeah. sometimes people don't know what is depression, what is anxiety, and what is just a sadness. There is Yeah. big difference between all of these things, no? So first you have to clarify then why you are feeling like that, like you are getting panic attacks. What is panic attacks? What do you think? Audience, would you like to say anything about panic disorder, panic attacks? And someone also said marketing with Mayuri said anxiety is when you feel nervous, worried, or scared, especially about things that might happen in the future. It is like your brain overthinking things and feeling uncertain or afraid. Yes, this is fear. Fear of losing something, fear of future, fear of career, fear of financial things, how to take care of their families, how to take care of them as well. So this is called fear. So yes, if you have any fear, then it turns into the anxiety and become a panic attack. How can people know what anxiety is like if they're actually, yeah, like some See, symptoms or uh, the, something? yeah, there are so many symptoms like increased heart rate, rapid breathing, sweating, trembling, feeling weak or tired. There are so many things, but not every time.
Don't think like if you're having headache, then it is anxiety. No, not every time. But if it is happening constantly, repeatedly, then it is anxiety. Acha. Uh, Because sometimes we all feel like there is a headache or we are not feeling comfortable in our own body. Sometimes we all feel like that. But it doesn't mean we all have anxiety at that point of time. hmm. So I also had some few questions. So what are the common physical, of course you said physical and like emotional symptoms of anxiety? Yeah. So the physical symptoms, as I said, it increased heart rate, rapid breathing, sweating, trembling, or I can say a shortness of breath, dizziness, headache, stomach ache as well. So if you talk about emotional symptoms, so feeling nervous, restlessness, having sense of impending danger, as we discussed, like panic or doom, trouble in concentrating of making decisions. So at that point of time, that are emotional anxiety, symptoms of the anxiety. Because if we talk about our family, if we have to take some decisions for our family, at that point of time, there must be a fear. Okay. Hmm. So Yeah. we'll think like what will happen if I'll take this decision, what will happen in future, how it will impact to our family. So these all are the like emotional symptoms for the anxiety. In fact, in offices, in our workplaces as well, we feel that emotional anxiety, that physical symptoms of anxiety. Yeah. And someone said past trauma also provoke anxiety. Yes, exactly. If you have any past trauma, if you are facing that issue, so it is deep inside your mind, right? Hmm. It is inside your mind, and you are constantly thinking about it again and again and again. If it will impact in your decision making for future as well, because you will always think that I took this decision on that point of time and it happens. So if I'll again take any kind of decision like which is similar to that or any other decision, so might be something wrong happen in my future. So yes, past trauma also increase the anxiety. Okay. And they also asked it can it happen between long period gaps or continuously? Yes, anxiety is something which comes by trigger. Sometimes it get triggered. Sometimes if a person is facing some issue, has faced some issue in the past, right? Like I have faced some issue in the past, but after that I recovered and I'm living my normal life. But again, that kind of like similar to that, any incident happen in my life in present time, then it will trigger that trauma as well. Okay. Yeah. And someone, Ritika Vadva asked, what to do Mhm. if I feel anxiety in public? If you feel anxiety in public, then try to concentrate on your activities, how you are behaving, how you are talking, have something sweet, try to divert your mind, check your phone or do something, whatever you like. Sit somewhere and have some like a glass of water, have something sweet to drink, basically to drink. Hmm. All right. Lakshmi asked how to distinguish between feeling of stress or nervous and feeling of anxiety. So there is see there is very slight difference between both of them. Okay, and if you're feeling stressed, you will feel uncomfortable, uneasy in your own body. Hmm. And if it is anxiety, again you will feel the same thing. But in both of the things, in like feeling nervous, if you are feeling like nervous or if you are stressed, so you will be able to manage that stress. But in anxiety, you won't be able to manage that things. It will like you will start overthinking again and again and again. That like if you try to manage yourself now in anxiety, you won't be able to do it alone Hmm. All right. because Uh,
Yes, yes, Yeah, please continue. because yeah, sure. Because in anxiety, in managing anxiety, you have to like follow some things, like some exercises, some like eating habits, sleeping habits. You have to manage those as well. So yes, it is difficult to manage with anxiety, but if it is stress, so yes, you will be able to manage that. Okay. Vanish also asked, do anxiety lead to panic attack? Yes, it depends on, as I told you earlier, like it depends on if we are facing the issue from so long and we are not aware about it. But the similar incident happened in front of us, not even with us, Mm. but it happens in front of us with anyone else. So yes, it might trigger. Not every time, but it might trigger. It depends on your past trauma. And Uh, I would like to ask the audience, are they comfortable in English? And if they won't, we can speak in Hindi too. yes. Also, there was one more question. Ritika Vadhwa asked, Mhm. it is often with me that my blood pressure levels reduce while I'm nervous. Yeah, it happens. So many times it Yes. happens. Few people face high blood pressure, few people face low blood pressure, and with low blood pressure, you will like feel like your stomach is aching, you are not able to eat anything, you feel like you want to go for vomit, something like that. Okay. It happens. Ritika said both Hindi and English is fine. Okay, okay. Uh, I'll continue with the questions. Mhm. So how are panic attacks and anxiety attacks different? So How can you distinguish? panic attacks are official medical terms that refers to physical symptoms. Anxiety attacks don't have a specific definition. So anxiety attacks are often triggered by some stressors, as I told you earlier, and can build up gradually. While panic attacks are sudden and unexpected, it will happen anytime with any of the like act, you can start feeling anxiety. The Achha. anxiety, you will get the anxiety attack. And yeah, you actually said this already. Anxiety, how Yeah. does anxiety differ from everyday stress? Right. Yes. Then what are the most common triggers of anxiety and how do they vary in different people? See, it depends on life circumstances, substances, sleep deprivations, personality, and genetics as well. Few people are facing this anxiety issues just because of genetic issues. Yeah. So, common anxiety triggers basically is medication research that some medication says, like birth control pills or steroids, may cause anxiety symptoms or anxiety attack. Because if we are taking something which is unnatural, see, our body is working naturally, right? And we are taking some pills which is to improve our body. People are taking steroids. Why? Because they make their body like right. So in that case, they are putting something in their body which is unnatural, right? And if Yes. you'll take that kind of thing, that kind of pills, that kind of medicines in your body, then obviously your body might react differently, and it becomes in a panic attacks. You will feel uneasy if you are taking something unnatural, something which is not common. You are giving that thing to your body like you are living your life from 20 years, the way your family wants, the way normal people live. And after 21 years, 20 years, in the age of 21, 22, 25, you are taking something which is not common. So obviously your body will react Yeah. because this is something which your body is not habitual with that. No? Your body is not aware with that. What is this? So at that point of time, yes, you will feel like that. And unhealthy eating habits, like we usually everyone eats in the night after the corona. So corona after the corona, everybody's life cycle is like Yeah. disturbed. People love to eat in the night at the time of 2, 3, 4, early in the morning, and they are not sleeping till 3, till 4. They're just scrolling the Mhm. Instagrams and everything.
So yes, this may cause the panic attack. Okay. This will increase your stress. Self-neglect, like I previously said, like we just think that it's just a stress, it's just anxiety, we can manage with it. So it will increase. Hmm. If we are not feeling good, like if physically we are not fit, we took some medicines, we took some advice from doctors, right? So as it is, mental health is something which also requires the help. And if you are not taking proper help from the counselors, from the psychiatrists, so yes, it will give you panic attack. Yeah, that's true. Very true. Yeah. Uh, then can you tell me about mindfulness and meditation, how it helps managing anxiety? Yeah, sure. So, mindfulness meditation prompted a switch of attention from their internal thoughts to the external environment. They try to manage they try to cope up with their like personal internal thoughts to Yes. manage with the environment Hmm. situation. So yes, for that you have to meditate. When you meditate, you focus. You'll stay focused, right? You Yeah. learn how to focus on things. If you are somewhere you are not feeling comfortable, obviously your body will react. But if you know how to focus on that things, so definitely you will be able to manage that. So in that, some circumstances, there are some examples for that. Mindfulness breathing, progressive muscle relaxation while exercising. Okay, and if you'll do exercise, it will help you better to focus on the things. Body scanning, like how you are talking, how you are standing, how you are Hmm. behaving. So focus on yourself as well. And if you're still not feeling comfortable, like I said, take something which is sweet, have some water, just go and sit somewhere, give yourself some 4 minutes, 5 minutes, then you'll feel comfortable. All right. But in that situation, you should know how to focus on the Hmm. things. So, focusing is the major thing which you have to learn. Hmm. Yeah. It gets very difficult when you're having anxiety, just focusing on the Yeah, present. yes, exactly. But if you are able to do meditation Hmm. now, so it will really help. So meditation really helps your exercise. If you are going to gym, if you are doing yoga, if you are getting early in the morning, getting up early in the morning, and if you are going to a park, you are walking in a park, just walking in a park, Hmm. not running. Okay. And if you're just walking in a park, if you're talking with other peoples, like if you're not feeling comfortable, you are just doing chit chat with your friends, with your loved ones from whom you are feeling comfortable, who will not judge Yeah. you. So, yes, it will improve your focusing power. All right. Uh, Also, Manish said anxiety is very commonly used among people now. It's like passed off as a feeling. Yeah. Can you repeat that question? Your voice So was breaking. people nowadays use anxiety as a common term, not like a disorder thing. They just pass it off as a feeling. Yeah, as I told, that people don't know what is anxiety or what is just a stress. That is why they are taking anxiety very easily. But yes, it will impact. And if the thing is happening sometimes, then it may be a stress. But constantly on everything, you are feeling uncomfortable, you are restless, you are not able to sleep, you are always overthinking about anything, then yes, it is anxiety and you seek a help from a counselor. Okay. And trust me, guys, in this, in our society, people thinks that taking help from mental health advisor, it is something which is shameful. No, it is not. It's just like you are taking care of your mind as you always take care of your physical body, Yeah. and your mind is also a part of your body, no? So why people, I really don't understand why people think like it is something which is shameful, where people will going to judge us, it is mental disorder. No, it is not. Yeah. If you are feeling something like that, just go to a counselor, have one session, have two sessions, then you'll come to know if you're feeling relaxed in those. So stop that.
If you're not, then go for it now. Yeah, the stigmatization has to stop. And like it's high time because Yeah, we are getting more aware of everything, and now that we have terms for everything, people didn't know before. They were like commonly just saying that घबरा रहे हैं जो भी hmm. ऐसा टाइप का. पर अभी तो पता है तो I think स्टिग्मा तो हट जाना चाहिए. यस एग्जैक्टली देखिए मैं आप लोग को एक ही चीज समझाऊंगी. समटाइम्स क्या होता है ना, फियर ऑफ जजमेंट इज समथिंग जिसमें हम लोग को लगता है कि यार ये पीपल हमें जज करेगा, ये करेगा. बट अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो at that point of time you are the only one who is going to face with that issue, with that mental disorder. So जब हमें फीवर होता है, we directly go to the doctor ना, and we don't feel ashamed like we are having fever Yeah. by telling anyone. हम लोग किसी को भी बताते हुए नहीं सोचते हैं कि मुझे फीवर हो रहा है. So yes, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, और स्ट्रेस इज नॉट समथिंग विच इज मेंटल डिसऑर्डर. स्ट्रेस एंजाइटी इज समथिंग लाइक यू आर नॉट कंफर्टेबल. आप किसी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, आप कुछ खाने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको हेल्प लेनी चाहिए. इस चीज को सोचे बिना कि पीपल विल जज यू. अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, इट विल इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ, एंड इन फ्यूचर what will happen, they will judge you anyhow, somehow they will judge you anyways. बट आपकी मेंटल हेल्थ उनके बारे में सोचने की वजह से और ज्यादा बिगड़ भी सकती है. सो Yes. यस, आई प्रेफर कि अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है, go and seek for the help for the counselor. Talk to them, they will definitely help you in that. And in like counseling, in therapies, not every time we give the medicines. Hmm. Yeah, okay. So in some cases, in some severe cases, medications are required, but not in every cases you need medicine. So if you don't want to share that you are going to a counselor, you're visiting a counselor. So if you're not sharing that thing with anyone, then anyone would not know about it. क्योंकि आपकी कोई medications होती ही नहीं है. You're just doing your daily routines. You're changing your lifestyle by doing exercises, by doing yogas, by taking some gap from the people. You are watching the movies. You are enhancing your sleeping habits, your eating habits. So nobody will know. Yeah. Yeah, exactly. Yeah. Uh, so yeah, I have another question. What role does physical exercise play in reducing anxiety, and how can it be incorporated into daily routines? If we'll talk about exercises, so exercises reducing your physical tension, your muscle retention, and if you're doing exercise, so endorphins also release. Okay, so if endorphins release, so you will get some strength in your body, and if you are doing exercise, so you are focusing on something. एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करके देखो, उसके बाद इफ यू आर नॉट गोइंग सम डे बिकॉज ऑफ सम एनी ऑफ द रीजन, you will start feeling uncomfortable that something is missing from our life. It is just exercise is just like the meditation. Like we do meditation for focus, and exercise is something which is for focus. Like आप एक्सरसाइज करते हैं, सो आपका फोकस होता है कि हमें कितने रैप्स करके बॉडी के किस पार्ट को कैसे इम्प्रूव करना है. So again, you are working on your body, and if you are doing that, so आप थोड़ा सा tired भी feel करेंगे, because if you are doing exercise, you feel tired, and in fact, it enhance your food, it enhance your sleeping habits, because अगर आप exercise करके आए, workout करके आए, तो आप थकेंगे. थकेंगे तो आप अब जाकर के टाइम से सोएंगे ही. एंड इफ आपने कोई कुछ मेहनत की है, ठीक है, कुछ फिजिकल वर्कआउट किया है, तो आपको भूख भी लगेगी. सो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज होगा. Mm. एंड ईटिंग इज ऑल्सो इज मेजर इशू, बिकॉज हम लोग कुछ भी खाते हैं, राइट. हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन, कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो चाहिए होती हैं ऑन अ डेली Mm. बेसिस.
but few peoples are eating from outside on a daily basis. वो भी आप लोगों को इम्पैक्ट करता है. सो Yeah. आप एक्सरसाइज करेंगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार अब इतनी एक्सरसाइज, ऑब्वियसली आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करके आओगे, 1 घंटा स्पेंड करोगे एंड आपकी बॉडी भी टायर्ड फील करेगी, पेन भी होगा, तो आप भी ये सोचोगे ना कि यार अब इतनी मेहनत की है तो चलो यार कुछ अच्छा ही खा लेते हैं, इट समथिंग हेल्दी. Hmm. एंड वो जो टेस्ट आपको चाहिए ना, वो आपको घर के फूड में भी मिल सकता है. इंस्टीड ऑफ ईटिंग मैदा, द नूडल्स एंड एवरीथिंग, Yeah. आप सेवइयां खा सकते हो. यू कैन मेक इट लाइक अ नूडल्स by Yeah. using lemon instead of vinegar. So these are some tips. Like if you're doing exercises, then balanced diet is also mandatory with Yeah. that to focus on the Yeah. things. Yeah, it's like proven only. Like some deficiencies do cause depression, anxiety, singers the. Yeah, Yeah. yes, exactly. Because see, if we are doing something, like if we are a person, if we are going to purchase something, if we are like purchasing a suit, as we are girls, Hmm. we are going to purchase a suit. Obviously, हम वहां जाकर के देखेंगे कि ये ब्रांड क्या है, ये शॉप क्या है, और इसने स्टिच कैसे किया है, ये कैसा स्टिच है, इसका पैटर्न क्या है, इसका डिजाइन क्या है, सब चीज देखेंगे Hmm. ना आज के टाइम के हिसाब से, हाँ. इज मैंडेटरी. तो वो जो शॉपकीपर होगा, वो जो स्टोर कीपर होगा, वो क्या करेगा, वो चीजों को वैसे ही बनाएगा जैसे आज की डिमांड है. Yeah. सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि हमारी बॉडी भी वही मांगेगी जो उसकी डिमांड है. इफ वी आर नॉट गिविंग दैट थिंग्स, और जो हमारी बॉडी की डिमांड है हम उन्हें वो नहीं, वो उस चीज को वो प्रोवाइड करेंगे, लाइक विटामिन, मिनरल्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी अलग से रिएक्ट करने लगेगी. Hmm. It will react differently, or then it will start reacting differently now after some time, or some people face this issue after a long time. आपको समझ में आएगा, आपको फिजिकली तो बहुत सारे इश्यूज हो ही गए हैं और मेंटली भी होंगे. इफ यू आर फिजिकली नॉट फिट Hmm. and every day you are not like well, every day you are feeling something like this is happening, I'm not feeling good, I'm not well, every time, every day you are taking medicines, so obviously your mind will react like that. You will feel anxiety and it turns into a panic attack. So yes, exercise is really very mandatory, but along with the exercise, your diet is also very Yeah. mandatory. मैंने सुना है कि गट और माइंड बहुत कनेक्टेड होते हैं वैसे भी. Yes, exactly. हाँ. So there's also one other question. Can you please tell some fun activities for coping with anxiety? Yes, you can do a journal. Like अगर आपको एंजाइटी फील हो रहा है तो आप लिखना शुरू कीजिए. Hmm. आपके जो भी थॉट्स है ना आपके माइंड में. सी, एंजाइटी क्यों होती है? बिकॉज वी डोंट हैव ईयर हु कैन लिसन टू अस very patiently, very calmly, and also not going to judge us, Hmm. right? Because judgment is also a fear, ना? Yeah. इसीलिए तो हम किसी को जाके कुछ नहीं बता रहे हैं. But yes, in that case, what we can do is आप जर्नल लिखते हैं. So वो जर्नल क्यों लिखना चाहिए? Let me explain that. आप जर्नल लिखेंगे. So आपके जो थॉट्स हैं ना, जो आपके माइंड में यहाँ पे आपको पैनिक कर रहे हैं, so वो थॉट्स निकल के बाहर आएंगे Yes. on that paper. तो जब आपके माइंड से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं, समथिंग इज स्ट्रेसिंग यू, गिविंग अ स्ट्रेस, लाइक मेरे घर में कोई एक चीज है, सपोज इट्स अ छिपकली, Hmm. लिजर्ड, और वो मुझे पैनिक कर रही है. Hmm. अब वो मुझे पैनिक कर रही है तो कर रही है, अगर मुझे उससे फियर है तो है, बट जैसी वो बाहर जाएगी, आई फील रिलैक्स्ड, Yeah. आई फील कंफर्टेबल, राइट? तो यही ऐसा ही है. योर घर इज योर बॉडी, इज लाइक योर घर, एंड योर स्ट्रेस इज समथिंग which is bothering you, which you Hmm. don't like. So if you write it, no, so it comes out of your mind. Hmm. When it comes out of your mind, your body, like the way I feel, I started feel good in my house, na, ki Hmm. हाँ चलो, that lizard is gone. So, and in that same scenario, so as it is, you will feel comfortable in your body because that stress you have, like write it down somewhere, वो थोड़ा सा बाहर आ गया, it Hmm. comes out from your body. Somewhere somehow वो आपके mind में रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा, but on that particular time when it is panicking you a lot and you are writing it,
तो वो आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा आप अगर कुकिंग करना पसंद करते हैं तो कुछ अच्छा बनाइए, कुछ कुक कीजिए, फैमिली के लिए कुक कीजिए, खुद के लिए कुक कीजिए, कुछ Hmm. अच्छा खाइए। ठीक है। अगर आपको वेब सीरीज मूवीज देखना पसंद है या कार्टून्स देखना पसंद है, वॉच समथिंग हैपनिंग लाइक लाफ्टर शो, like cartoons, Tom and Jerry, Doraemon, anything like that, some happening web series. So उस टाइम पे कुछ भी मिस्टीरियस, कुछ भी थ्रिलर, कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी वाला नहीं Hmm. देखिए। इट विल इम्पैक्ट ऑन योर Yeah. स्ट्रेस। सो अगर आपको माइंड रिलैक्स करना है तो डू समथिंग हैपनिंग, वॉच समथिंग हैपनिंग विच इज Hmm. हैपनिंग, राइट? And most what else I can say in that, that yoga, that meditation Hmm. also works in focusing, like okay. And what else I can say in this, sleep pattern, Yeah. the eating habits, try I always used to do this whenever I feel stressed, because I am listening the stress of people's every day. Yeah. I am handling people's 9 to 10 every day. Hmm. Sometimes it increase, sometimes it decrease as well. Some sessions goes well, but some sessions become a panic for me as well, Hmm. because it's just like that कि हमें लगता है कि we are the only one who is dealing with the problems, but when we start talking with the people, no, so we come to know कि नहीं, they are dealing with they are also dealing with the problem, and which is more bigger than ours. Hmm. So sometimes हमें भी stress होता है. So when I feel stress, when I feel like it is anxiety, exactly not anxiety, but yes, it is coming up again and again. So I used to watch TV, some cartoons or laughter shows, Hmm. and I love to eat ice cream, something sweet, because कुछ मीठा खाने से सच में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने लगती है. else I start cooking, कि कुछ बना लेती हूँ, चलो माइंड Hmm. डाइवर्ट होगा. बेसिकली आई एम जस्ट डाइवर्टिंग Hmm. माई माइंड. You can call it therapy, you can call it like these are the things which we can do, and it will help. But in basic, in at the last, if we can say, we are just trying to divert our Hmm. mind, and people can divert their minds as per their convenience. Yeah. They can do whatever they like. Some people, some of my patients are love to do poetry, like love to write poems and all. So they are doing poetry. I always give them task, go and write a poetry. I Hmm. always ask them to draw something. If someone is good at drawing, so I ask them, go and draw something, go and cook something, have some Yeah. time, calm down, take deep breath in. Breathing exercise also Hmm. works. Yeah. Yeah. Even for me, cooking is always therapeutic. Yes. Yeah. Uh, I had a few other questions. So, what are some lifestyle changes or habits that can help prevent or reduce anxiety over time? Mm, in that case, what must I say? Already, we already like discussed the things, that Yeah. exercise, Hmm. that sleep, that diet. Because see, we have so many questions for anxiety and the stress and the panic attacks. Hmm. But what is the solution? Solution, whichever whatever we have discussed, that this is only the solution. Because anxiety and depression, like anxiety, stress, panic attacks doesn't need any Hmm. medication. It just needs self-care, Yeah. focusing on Hmm. yourself, Okay. maintaining and managing yourself. So yes, whatever I discussed in this session, so what if you like focusing on that thing, I'm not saying that go and do everything whatever I say. Hmm. No, do such things in which you are comfortable. Like अगर आपको मैंने 10 चीज बोली है, उसमें से आप दो चीज में कंफर्टेबल हैं, तो आप वो दो चीज कीजिए, बट कीजिए. Hmm. अगर आप वो दो चीज करते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलती है. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी चीज के लिए डेडिकेटेड हो रहे हैं. आप कुछ बना के खा रहे हैं, डाइट है, तो वो अच्छी चीज है. If you are taking any medicines, any kind of like as we discussed, steroids
or caffeine, nicotine, or like any illegal drugs. सो यस, उसे छोड़िए बिकॉज उसके साथ भी एंजाइटी बढ़ती है, बिकॉज वो आपके सोचने और समझने, वो आपके माइंड को स्टेबल नहीं रहने हम्म देता है ना, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको आप अननेचुरल ले रहे हैं, हम्म ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए नहीं या है. पीपल आर टेकिंग इट ऑफनली एंड डे ऑन अ डेली बेसिस, who are habitual with हम्म that. But अगर आप ये सारी चीजें अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, so obviously प्रॉब्लम होगी ही हम्म होगी. सो यस, अभी एकदम से अगर कोई ये चीज कर रहा है तो ऑब्वियसली एकदम से कोई नहीं छोड़ सकता है. बट इफ यू डाइवर्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स योगा, टूवर्ड्स वॉक इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, टूवर्ड्स meditation, towards exercise, so obviously slowly and gradually you'll start leaving it. And you can take counselings as well for that, to leave that illegal drugs and medicines, whatever you are taking, which is harmful for your body. yeah. What is the difference between seeking help from a therapist or counselor versus relying on yourself for like self-help strategies? Yeah. So, counselor and therapist will help you how to manage the things. Will give you some tasks. Will let you know with the journals what to do, what not to do, what will impact. They will make you understand what will impact, what is the impact of particular such actions, such things on your body. अब ऑब्वियसली मैं आपको 10 चीजें बताऊंगी, तो आप उसमें से 2 या 3 तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ना कि हाँ चलो ये बात इन्होंने सही कही है, एंड आई एम सॉरी, एंड आई एम एबल टू डू दिस. आप उसमें से 3 फॉलो करोगे, 4 फॉलो हम्म करोगे, 10 तो नहीं करोगे. कोई भी नहीं करता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. आई एग्री ऑन दैट. yeah क्योंकि अगर कोई मुझे भी बोलेगा तो ऑब्वियसली मैं वो 10 चीजें नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मेरा अलग काम भी हम्म है ना. सो मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे अपनी फैमिली पे भी फोकस करना है, मुझे अपनी अदर थिंग्स पे भी, अपनी अदर एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है. एक सोशल लाइफ भी होती है. हम्म सो यस, मैं सारी तो नहीं करूंगी, बट कुछ तो करूंगी. अब जब कुछ चीजें मेरी हैबिट में आ जाएंगी करने के लिए, सो धीरे धीरे मैं जो हमारे काउंसलर्स हमें थेरेपीज बताएंगे, जो वो हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, एंड रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर, तो वो हमें कैसे बिल्डअप करना है. इफ यू आर इफ काउंसलर इज टेलिंग यू दैट एंड इफ यू आर फॉलोइंग दैट थिंग्स, तो आपको पता है कि आपने 5 चीजें सुनी है, तो 2 चीजें आप कर पा रहे हो, आप मेंटेन कर पा रहे हो. हम्म पर आप 5 ही पा रहे हो, लेकिन मेंटेन आप 2 कर पा रहे हो. तो ऑब्वियसली वो चीज, वो जो उन्होंने आपसे डिस्कस किया है, तो वो चीज जब आप अपने पार्टनर, अपनी फैमिलीज के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ वो चीज वैसे बिहेव, इम्प्लीमेंटेशन करोगे उन चीजों के, तो वहां से सामने वाले पर्सन से भी चीजें करेक्ट होंगी. ठीक है, वहां से भी चीजें चेंज हम्म होंगी. तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस कैसे कम होगा, वहीं से कम होगा, आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होने लगेगा. अगर वर्क प्लेस पे इश्यू है, डेडलाइंस, टाइमलाइंस आती हैं, बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, टारगेट्स होते हैं, तो वहां पे भी हम लोग आपको काउंसिल करते हैं कि हाउ टू कोप विद दैट थिंग. तो वहां पे अब एक पर्सन है, वो पर्सन क्या करेगा कि अब इट्स लाइक आई एम अ नॉर्मल पर्सन and I'm dealing with this anxiety and these panic attacks, and I'm just seeking for the help. Like I'm just searching on a Google and reading the books and trying to manage it by myself. It is something which I am trying to manage. So मैं ये भी सोचूंगी, तो यार ठीक है, अभी जो सिचुएशन है, अभी इसको देखना है हम्म मुझे. अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा करूंगी, राइट. बट इफ यू आर सीकिंग हेल्प विद अ काउंसलर, तो वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपको गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है. हम्म क्योंकि आपने ये तो सोच लिया, आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई मुझे गुस्सा नहीं करना है, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनेज इट, हम्म बट ये तो पता ही नहीं चला ना मैनेज हम्म करना कैसे है. हम्म सो काउंसलर आपको वो प्रॉपर चीजें बताएंगे, लाइक जर्नलिंग बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रेस को लिख सकते हो, लिखने के बाद आपको कैसा फील होगा. ठीक है, लिखने के बाद भी इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो वो आपको उसके आगे क्या करना है वो भी बताएंगे ना. हम्म सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, और उसके अलावा आपको ये बताएंगे कि फिजिकल टेंशन कैसे रिड्यूस करनी है एक्सरसाइज में. अब ऑब्वियसली आप जिम जा रहे हो, अब सारी एक्सरसाइजेस तो नहीं करोगे. हम्म देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस, बट उनमें से कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आपके स्ट्रेस को एग्जैक्टली रिलीज करती हैं. हम्म सो ऑब्वियसली काउंसलर विल टेल यू ना
If you are not a gym freak, you don't like to go to the gym, so yes, exercise तो लिखा है, but exercise तो कुछ भी हो सकती है ना. If you are doing meditation, it's again an exercise, na? You Hmm. are focusing something, so it's again an exercise. So Yes. उस टाइम पे क्या होता है कि काउंसलर्स आपको, साइकोलॉजिस्ट आपको, थेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं कि ये चीजें तो करनी है, पर ये करनी कैसे है. Hmm. इफ यू आर फीलिंग विद समथिंग ना, इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने की. आपको पता होगा ये करके शायद चीजें ठीक हो जाएं, बट आप नहीं करोगे. Yeah. बट आप किसी से अगर हेल्प ले रहे हो, फॉर टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवन, तो ऑब्वियसली वो आपको पुश करेंगे. हाँ. एंड प्लस लाइक इट्स ह्यूमन. अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ा आ हम्म. जाती है कि आप दूसरे या से बात कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा अब तो. इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन मेंटेलिटी ना. आई टोल्ड यू ना, इट्स आवर मेंटेलिटी कि हाँ, अगर हमें कुछ करना है ना तो हम लेजी भी हो सकते हैं. हम्म. एंड इफ पर्सन इज अ फोकस पर्सन ना, तो उसे एंजाइटी होगी ही नहीं ना. या. एंड obviously if the person is not able to focus on such things, not able to manage the things, that is why that person is feeling anxiety or stressed. हम्म. So and in that case, what is needed, अगर आप अपने आप को खुद मैनेज कर सकते हैं तो then it is very good. बट आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो कोई पर्सन होगा जो आपके सर पे खड़ा रहेगा. हाँ. अब हम खुद से करेंगे तो हमें ये होगा कि हाँ ठीक है, कर लेंगे यार, चल कल से करेंगे, कल परसों हम्म. से करेंगे. बट जैसे इट्स जस्ट लाइक कि हमें पढ़ाई करनी है, हम अकेले बैठे हैं ना, तो हम सोचेंगे चल थोड़ी देर बात करते हैं. बट हमें पता है ना, हमारे पेरेंट्स सामने बैठे हैं और वो हमसे पूछ लेंगे कि आपने आज क्या पढ़ाई की, तो हम पढ़ेंगे हाँ. और अपना एग्जैक्टली. 100% फोकस भी देंगे. सो यस, अगर आप किसी काउंसलर से हेल्प लेते हो और आपको पता है कि कोई somebody इज वॉचिंग, सो ऑब्वियसली आप सब कुछ नहीं, ऐसा ही टोल्ड यू कि हम 10 चीजें नहीं करते हैं. हम्म. नोबडी कैन डू यस. दैट. बट आप 2 या 3 करोगे खुद को मैनेज करने के लिए. यस. और जब आप 2 और 3 के लिए हैबिचुअल होगे तो आप 4 और 5 पे भी जाओगे, फिर 6 और 7 पे भी जाओगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लाइक किसी काउंसलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एक टाइम आएगा ऐसा, बिकॉज ऑब्वियसली आप मेडिसिन भी लेने जाते हो, ठीक होने के बाद दोबारा थोड़ी जाते हो डॉक्टर के पास नहीं, मुझे रोज रोज मेडिसिन दो, राइट. या. सो वही सेम चीज यहाँ होगी कि आपको वो चीजों को मैनेज कैसे करना है ना, वो आ हम्म. जाएगा. अगर आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में सेशंस लेकर वो चीज सीखते हो और वो सीख गए, तो ऑब्वियसली वो लाइफ लॉन्ग आपके माइंड में है ना, बिकॉज आपने वो चीज खुद की है. अब या. हमने तो सिर्फ बताई है, करने वाले तो सामने वाला पर्सन है. और जब सामने वाला पर्सन उस चीज को कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन उस चीज को याद रखेगा कि हाँ मैंने ये किया था, तो मुझे पता है इस सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना. एंड अगर कोई बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आ गई है जहां आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, सो अगेन यस, वी आर देयर फॉर यू. या. ओके. Also, what are the benefits of journaling or writing for managing anxiety? See, in anxiety, or I can say in depression, or I can say in like anger, if we are journaling, sorry, I'm using some other terms as well, Hmm. but it will help our Yeah. audience to manage, cope with the Yes. things, okay? So अगर आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आप गुस्सा बहुत करते हैं, Hmm. क्योंकि एंजाइटी आएगी, गुस्सा आएगा, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू Hmm. यू, ऑब्वियसली यू विल रिएक्ट, राइट. आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं कि आप गुस्सा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बुरा फील करेंगे, सैड फील करेंगे, आप धीरे धीरे डिप्रेस हो जाएंगे. सो ऑन दैट टाइम आप जब लिखते हैं, सो वट एवर इज गोइंग इन योर माइंड इट कम्स आउट. व्हेन इट कम्स आउट, जब आपने लिखा, यू विल रीड इट. आप जब रीड करेंगे, सो ऑब्वियसली आपने जितना भी रीड किया उसमें से आप कुछ तो समझेंगे. जब आप उस कुछ को समझेंगे, ठीक है, तो Hmm. उस कुछ को समझने के बाद आप पहले उस पे काम करेंगे. ठीक है, जब आप उस पे काम करने लगेंगे, तो धीरे 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 आप और चीजों पे भी काम करने लगेंगे. अभी जब आपके दिमाग में 10 चीजें एक साथ चल रही हैं, तो आप वहां पे नहीं समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम Hmm. नहीं है, क्या चीज ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है. क्योंकि 10 चीजें एक साथ है, आप सॉर्ट नहीं कर पाएंगे उसमें से आपको पहले Hmm. क्या करना है. बट आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे ये चीजें हैं, तो इसमें से ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये मैं इतने टाइम बाद कर सकता हूँ या कर Hmm. सकती हूँ.
तो अब आपने एक जर्नल बना लिया, आपने चीजों को लिख लिया, स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ एक साथ सही नहीं होता कभी भी किसी की भी लाइफ में, ठीक है? तो हाँ। आप स्टेप बाय स्टेप उन चीजों के लिए काम करें। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ऑब्वियसली चीजें रिजॉल्व होंगी वन बाय वन। हम्म। और आपको ये एक आप एक डिफाइन कर पाएंगे कि दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज जस्ट दिस इज द एंजाइटी एंड दिस इज जस्ट अ थिंग कि मैंने इसे ओवर थिंक कर लिया है, आई कैन मैनेज इट फ्रॉम नाउ एज वेल. So it depends on. So हम्म। you'll get a clarity on your thoughts, या। right? ट्रू। And in aggression, if you're feeling aggressive, and what I said, if you're feeling depressed, and if you're feeling stressed, anxiety is there, then what are the benefits of the journal? I already discussed. हम्म। And if you're feeling like aggressive, you're in aggression. So on that time, आप जब लिखते हैं, right? तो आप अपने थॉट्स तो फिर भी बाहर निकाल रहे हैं। गुस्सा क्या होता है? वो हमारे अंदर का गुस्सा जो हमारे थॉट्स में हमारे माउथ के वे में बाहर निकाल देता है, मुंह से हम्म। बाहर, राइट? जिससे हम इम्पैक्ट करते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को, हम्म। ठीक है? जिस पर्सन से हम ये बात बोल रहे हैं उस पर्सन को, और अपनी मेंटल स्ट्रेस को भी खराब करते हैं। ऑब्वियसली लड़ने के लिए पहले अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करना जरूरी है, हम्म। तभी तो हम जाके गुस्सा करेंगे। सो आपको जब भी गुस्सा आता है, अगर आप लिखते हैं तो आपके थॉट्स तो बाहर हम्म। आ गए, बट आपको किसी ने देखा नहीं, किसी ने आपको सुना नहीं, हम्म। आपने आसपास का एनवायरनमेंट खराब नहीं किया, आपने अपने दिमाग से वो चीज बाहर निकाल दी, और वो चीज आप तक ही रह गई। अगर आप दूसरे पर्सन को कहेंगे तो वो भी आपको दो बात कहेगा, हम्म। फिर एंजाइटी और डिप्रेशन और एग्रेशन सब एक साथ आ जाएगा ना, क्योंकि अब आपने दो बात और सुन ली, हाँ। अब आपको उसके लिए भी रिप्लाई करना है। बट लिखने से क्या होगा कि आपने लिख दिया, आपने बाहर निकाल दिया, सामने वाले को पता ही नहीं चला। और जब सामने वाले को पता नहीं चला तो अगेन वो नई चीजें आपके दिमाग में नहीं। हम्म। सो यस, आप एंजाइटीज को जर्नल्स इसीलिए इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो छोटी बना देती हैं फिर चीज़ों को जो गुस्सा यस, कर रही हैं। जो हाँ। चीजें बहुत बड़ी हो सकती है ना उसको बहुत छोटा कर हम्म। देते हैं। और जब ट्रस्ट भी जब हम लिख के पढ़ते हैं ना, तो समटाइम्स ना हम खुद हंसेंगे या। अपनी चीजों पे कि यार, दिस स्टूपिड थिंग आई वाज गोइंग टू डू, हाँ, am बहुत I बार doing होता this thing, am I thinking about है। this? या। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती ना, हम्म। ठीक है? होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, बट उन कुछ के साथ ना हम 10 चीजों को और मिला हाँ, देते हैं, और वो सब कुछ हमारे लिए ना एक ब्लास्टर बन जाता है। इवन सो स्ट्रेसफुल यस। चीज़ें कभी अपन बढ़ा चढ़ा के ऐसे जब लिखते हैं फिर समझ आता है इट्स सो स्मॉल। हम्म। एक छोटी चीज़ें हैं अपन जब इतना। हम अपना राइट, जब हम अपना खुद लिख करके जो भी हमारे माइंड में चल रहा है खुद लिख करके पढ़ेंगे ना, उसे दो चार बार पढ़ेंगे तो खुद हंस पढ़ेंगे कि यार हाँ। सीरियसली, am I doing this such kind of stupid things? या। तो एग्जैक्टली। वो सीरियसली, और अपनी प्रॉब्लम्स में जब आप खुद खुद खुश हो रहे हो ना, हंस रहे हो, तो ऑब्वियसली यार हम लोग उस चीज को डील कर पाएंगे, विल बी एबल टू डील विद दैट। हम्म। You will start taking it या। easy, that this thing is not that much big the हम्म। way I was हम्म। thinking, that was the way I am thinking, in fact, या। right? So that was it for my questions. I'll ask the audience. Does anybody have any questions? Somebody had also asked again, what do I do when I feel anxiety in public places? The same answer. Yeah. If you are feeling anxiety in public place, give yourself some time. Just watch your actions. Go and sit somewhere alone for 4 minutes, 5 minutes, and think what is panicking you and why it is panicking you. When you come to know that this thing is panicking you, just try to avoid that particular thing. Have some water, take a deep breath in, hold for 30 seconds at least, and breathe out. And repeat it for 5 or 7 times. You will feel relaxed. It is a small tip for public place. Yeah. All right. Does anybody else have any questions? Okay. Yeah. Someone said, what are the benefits of online counseling? See, there is no difference between online counseling or offline counseling, but there is a small difference, which is in offline counseling, you have to take an appointment, and if you're taking an appointment from 4 to 5, तो obviously उससे पहले आधे घंटे, minimum half an hour, and after that half an hour, आपको traveling में लग जाता है। Hmm. ऑनलाइन में
आपको जो टाइम मिला आप उस टाइम तक अपने सारे काम खत्म करके जस्ट 5 मिनट पहले फ्री होकर के भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं, और उसके जस्ट 5 मिनट बाद आप अपना जो भी काम कर रहे थे आप उस पर कंटिन्यू कर Yeah. सकते हैं। और उसके अलावा थेरेपीज में, काउंसलिंग में बात करने में कोई सच कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज ऑनलाइन में जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम Yeah. बट वी आर टॉकिंग वेरी Hmm. कंफर्टेबली विद ईच अदर। सो यस, ऐसे ही काउंसलर के साथ काउंसलर आपकी एक्टिविटीज, आपके बात करने पहले आपके काउंसलर आपको सुनेंगे, Hmm. ठीक है, वो आपको सुनते रहेंगे फर्स्ट सेशन में, बिकॉज देयर इज समथिंग विच दे वांट टू नो, Hmm. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और वही सेम ऑफलाइन में होगा कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ आपको सुनेंगे, देन आपको कुछ रेमेडीज बताएंगे। एंड ऑनलाइन में भी वही Hmm. सेम चीज होगी। सो इट इज, देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट अ टाइम डिफरेंस। Yeah. Yeah, you Plus, can it's a little, save your yeah, time is saved, hmm, of course. Yeah. hmm. You can save your time in Hmm. online counseling. But all counselors are same. Whoever are working for offline, that they are doing the same thing. Or whoever working for online, they are also doing the same thing. Studies are same. Yeah. Someone asked, ma'am, what's the difference between anxiety and depression? See, anxiety is something like which is coming sometimes. Like it is coming, and you are feeling anxiety, you are feeling stressed, you are not like eating properly. But depression is something. I'll tell you the common reason, the common issue which always comes to the person who is feeling depressed. Hmm. Suddenly you start laughing. Suddenly you starts overthinking. In fact, some of times you are not thinking anything, but you started crying. Hmm. This is the most common Hmm. symptom. आप Hmm. कभी भी नॉर्मल फील करेंगे, आप कभी भी आपको लगे आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाएंगे। यस, थेरेपीज में हम बताते हैं कि if you are feeling stressed, if you are feeling anxiety, if you are feeling depressed, तो आप एक अपना एक happening imaginary world बनाइए। But in depression, obviously something triggered you. That is why you are in depression. Hmm. Something is there which is not normal as per Yeah. you. So on that time आपको क्या लगता है कि आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो आप ना अपने पास एक इमेजिनरी वर्ल्ड तो बनाते हैं, बट वो इमेजिनरी वर्ल्ड आप एक बहुत ही नेगेटिव वे में बनाते हैं। Hmm. सो दैट इज कॉल्ड Hmm. डिप्रेशन। आप नॉर्मल बिहेव करते करते यू आर फीलिंग लाइक यू विल क्राई। आप किसी से नॉर्मल बात करते करते आप रोने लगे। Hmm. कोई कोई भी बहुत छोटी सी भी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें चीजें थोड़ी सी खराब है, ठीक है, सो ऑन दैट टाइम बहुत छोटी सी सिचुएशन है कि यार मुझे अभी घर जाना है, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा, या मुझे कैब नहीं मिल रही है, या मुझे कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं, you will feel start crying. Hmm. You will panic yourself. ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों होता है? Hmm. You will start blaming yourself. That are the symptoms of depression. There Yeah. is big difference between depression and sadness, anxiety. लोगों को ये नहीं समझ में आता, उनको एंजाइटी, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस को लोग एंजाइटी समझ Hmm. लेते हैं, द सेम वे एंजाइटी को लोग डिप्रेशन समझ लेते हैं। Hmm. डिप्रेशन इज समथिंग एल्स एंड एंजाइटी इज समथिंग एल्स। एंजाइटी बहुत सारे रीजन से आती है, आपकी चाइल्डहुड से आती है, फैमिली में कोई कंफ्लिक्ट है उससे एंजाइटी आती है, बट डिप्रेशन इज समथिंग विच इज पैनिकिंग यू ओनली। Hmm. आप एंजाइटी किसी भी चीज से फील कर पाओगे, किसी भी चीज से फील कर जाओगे, पर डिप्रेशन होगा वो ऐसी चीज होगी जो आपके साथ हुई है, इट हैपेंस विद यू ओनली। तब आप डिप्रेस फील करेंगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये हुआ मेरे साथ, एट दैट टाइम मैं ये कर सकती थी लेकिन ये नहीं हुआ। व्हेन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, देन यस, तब डिप्रेशन आता Hmm. है। सो इसमें डिफरेंस होता है। जब आप एक काउंसलर से, दिस दैट इज व्हाई आई सेड ना, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि काउंसलर की हेल्प क्यों लेनी चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता ना कि Hmm. हम डील किस प्रॉब्लम से कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ स्ट्रेस और एंजाइटी और Yeah. डिप्रेशन। हम Yeah. कुछ भी एक्टिविटीज करते जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कोई चीज नॉर्मल नहीं कर रहे हो जो आपको चाहिए, जो आपके माइंड की नीड है, जैसे आपकी बॉडी की नीड होती है, राइट, कि आपको फूड चाहिए तो चाहिए, कपड़े चाहिए तो चाहिए, Hmm. ठीक है। सो वैसे ही आपके माइंड भी कुछ नीड्स है, आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हो ना Yeah. कि मैं प्रॉब्लम से किस चीज से डील कर रहा हूँ। तो यस, आप काउंसलर के पास जाओगे, दे विल डिफाइन Hmm. कि ये डिप्रेशन है भी या नहीं। जिसे आपने एक पहाड़ समझ लिया
वो एक्चुअल में छोटा सा पत्थर था. Hmm. सो समटाइम्स मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि यस, काउंसलर की हेल्प लीजिए, थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए. दे विल हेल्प यू बेटर इन. Okay. Great. And there was a question. My friend frequently has anxiety attacks and emotional breakdowns. How can I help her as a friend? See, as a friend, you just motivate her. But if she is frequently getting panic attacks, so she really needs a counselor, because there are some techniques, some therapies which we do with which we will ask her to do, which will go with her. So in that case, usko help milega. She will get the help. But you are not aware with this procedure, so obviously आप उसको mentally, emotionally help कर सकते हो. ठीक है, आप उसके साथ खड़े हो सकते हो. बट यस, एक काउंसलर जो हेल्प करेंगे, जो थेरेपी करेंगे, जिस तरीके से उसको हेल्प करेंगे, वो आप नहीं कर पाओगे. बिकॉज वील हेल्प हर बाय टेलिंग हर दी डाइट्स, द बैलेंस्ड फूड, by letting her know the exercises for controlling these panic attacks. So वो सारी चीजें काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, आप थेरेपिस्ट ही बता सकते हैं. बट यस, इमोशनली आप उसको हेल्प कर सकते हो, उसको मोटिवेट करो कि यस, कोई भी चीज अगर हुई है जो उसको पैनिक कर रही है कि हो गया, it happens, it happens. Now let's come up and let's change it. Hmm. Focus on changing these problems. Yeah. Someone said, how to handle suicidal thoughts? How to handle societal thoughts? I told you, divert yourself. If you are able to divert yourself, focus on some other things, then obviously you'll be able to manage with this. But if you are getting suicidal thoughts oftenly, so yes, you need a help. Go and talk with the counselors. Take help from them. They will help you with proper therapy. आप अभी मैं आपको कुछ भी बताऊंगी, कुछ भी चीज अगर मैं छोटी भी बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्ट Hmm. योरसेल्फ. अगर मैं इसके आगे कुछ बताती हूँ, वी आर नॉट गोइंग अंडर अ थेरेपी राइट नाउ, राइट. मैं आपको कुछ भी बताती हूँ, आप फोकस करेंगे, उसमें से कुछ चीजें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल गो इन अ रॉन्ग वे. अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर थेरेपीज होंगी. प्रॉपर पहले तो रीजन पता होना चाहिए ना, व्हाई यू आर गेटिंग दीज थॉट्स. और ऑब्वियसली पब्लिकली तो कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा Hmm. ना. सो आप अपने काउंसलर के पास जाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि आपको ये सुसाइडल थॉट्स आ क्यों रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ क्या है, वो आपसे डिस्कस करेंगे. वो एक कंक्लूजन पे आएंगे, देन दे विल कम टू नो ना कि प्रॉब्लम है क्या. दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली. बिकॉज अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो एंजाइटी भी बहुत सारे तरीके की होती है. Hmm. कौन सी, और हर एंजाइटी एक पर्टिकुलर थिंग की वजह से एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे आती है. Yes. अगर आपके पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे आर गेटिंग डिवोर्स एंड फैमिली सेपरेशन, तो आपको एंजाइटी आएगी. और मेडिकल टर्म्स में उसको अलग एंजाइटी कहते Hmm. हैं. और हर एंजाइटी के एक अलग थेरेपी होती है. एज यू नो, यू आर ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, no? Yes. So you know it better, Rukman. So Yeah, this yeah. is the thing. Yeah. That is why कि आप अभी अपने सोसाइटल थॉट्स के लिए आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं. Hmm. यू कैन कॉन्टैक्ट विद माइंड मैटर्स, दे विल हेल्प यू. Hmm. एंड यस, आपको वहां पे हेल्प मिलेगी. Yes. Yeah, the online counseling तो है. हम्म. Mind Matters does provide online counseling, so हम्म. you can book that if anybody needs help. And yeah, some people have said thank